ये मुझे अपना वॉइस इको हो रहा है, एक मिनट, इशू है क्या? माइक ऑन ऑफ करना है ना, मुझे अपना ही वॉइस इको हो रहा है बार बार। अब ठीक है सर? सर मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ ना, उसकी वजह से हो रहा है इको। हेलो, टू 0 है ना, तो आप इसके रूट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और आपके पास एक्स का वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट 2। तो इसका जो आपके पास जो सोल्यूशन होगा ना, जो एक्चुअल सोल्यूशन होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू आपके पास आएगा, लेट अस से एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। ये आपके पास जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास रूट की वैल्यू है, रूट 2 की वैल्यू ना। तो इन जनरल हम इसका सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट हम इसको प्लॉट करेंगे इस फंक्शन को ना। तो हमें पता है कि इसका रूट जो है 1.414 इसके आसपास वैल्यू है। तो मैं पहले इस फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ ना। तो मैं डिफाइन करता हूँ कि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई का वैल्यू है दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यूज है ना। तो इनिशियली मैं एक्स को पॉपुलेट कर देता हूँ। एक्स इज लिन स्पेस, एक्स इज फ्रॉम, लेट अस से दिस इज फ्रॉम माइनस या 1 to या 0.1 to up to 3 up to 100 पॉइंट्स, है ना। तो ये मेरे पास x का वैल्यू आ गया ना, ये कैरे जनरेट हो गया है। तो अब मैं प्लॉट करता हूँ इसको, है ना। प्लॉट x कॉमा दिस y, तो आपके पास प्लॉट आएगा, है ना। लेट अस से मेरे पास है y का वैल्यू जो पॉपुलेट नहीं है ना। अगेन मैं y को डिफाइन कर लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और देन आप प्लॉट करोगे इस फंक्शन को, है ना। तो आपके पास ये फंक्शन आ गया है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका इक्वेशन का रूट क्या होगा जहां पर आपके पास जो है ये फंक्शन 0 को क्रॉस करेगा ना। अगर आप यहाँ चेक करो तो समवेयर हियर, है ना। तो 1.0 और 1.5 के जो इन बिटवीन है फंक्शन 0 को 0 से जो है शिफ्ट हो रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है। तो इसका रूट समवेयर हियर लाई करेगा ना। तो मैं थोड़ा इसमें अगर हो सके तो ग्रिड प्लॉट करके दिखाता हूँ ना। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखो ना, हियर 1.5 के जो आसपास है वहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब एफ 0 कहाँ हो रहा है, 1.5 पर, एट एक्स इक्वल्स टू नियर अबाउट 1.5। तो इसका जो रूट होगा वो रूट लाई करेगा इन दो इंटरवल के बीच में, है ना। तो हमारे पास बहुत से न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका रूट, है ना। रूट फाइंडिंग मेथड, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट आपके पास पता होता है, आपके पास सोल्यूशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट है ना। सिमिलर वे में हमारे पास एक मेथड है बाइसेक्शन मेथड, है ना। तो बाइसेक्शन मेथड क्या है, एक ब्रैकेटेड मेथड है जिसमें मेरे पास इंटरवल मुझे पता होना चाहिए कि रूट एक्चुअली लाई कहाँ से कहाँ कर रहा है, किस इंटरवल के बीच में कर रहा है। तो मेरे पास जो क्लोज्ड इंटरवल यहाँ है, तो मेरे पास 1 और 1.5 के बीच में रूट लाई कर रहा है। वो मैंने प्लॉटिंग से चेक कर लिया है कि मेरा फंक्शन कहाँ जो है 0 को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास जो इंटरवल में जो a का वैल्यू होगा वो 1.0 और जो b होगा वो मेरे पास क्या होगा 1.5। और मेथड क्या है, मेथड है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। आपके पास क्लोज इंटरवल है, लेटर से जो a है, a का वैल्यू मेरे पास a इक्वल्स टू दिस 1.0 एंड v इक्वल्स टू दिस 1.5, है ना। ये मेरे पास क्या है, इनिशियल जो है मेरे पास इंटरवल है जहां मेरा रूट लाई करता है। तो अब बाइसेक्शन मेथड में क्या है कि आप इस इंटरवल के बीच का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर दो। लेट अस से जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इक्वल टू दिस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2।
तो अब मैं रूट कहाँ कैलकुलेट करूंगा? इस मिड पॉइंट पे ना, और आप फंक्शन का वैल्यू भी वैल्यूएट कर सकते हैं इस मिड पॉइंट पे. लेट अस से फंक्शन is equals to this by defining a function called lambda this x colon x square minus 2. Okay, we calculate fn at 1.0, or you can calculate this function at x value at 1.5. So these are the values, initial values at this point, 1 point. Okay, at a function at 1.1 is this is negative of -1, and at 1.5 the function value is 0.05. So one of those intervals value of function is positive and somewhere is negative. So we calculate a midpoint, and we want to evaluate the function value at that midpoint. So this value is minus 0.43. So this is not close to 0 actually. This is minus 4 point here somewhere. So we calculate a function value at some interval, bracketed interval, let us say a, and then calculate the function value at some here interval at b, this closed interval, and then we calculate an estimation at a midpoint. So we can always calculate a midpoint. That's called the method of bisection. We are dividing this interval into two equal halves. So let us say this midpoint is somewhere here at 1.5, and this is at midpoint. Values, let us say I write midpoint is at 1.25. Okay, here some midpoint 1.25, and this function has some value here, but the function is values negative up here, and you can interpret from this graph. So what bisection method said, let us say this function at a and product of the function at this midpoint. Okay, midpoint is negative. Okay, is negative. If this function at a, function value at a, and function at midpoint is both is negative, product is negative, then root lies between these 2 points. Okay, if that's not, the root lies the other point, that is f mid and the f at interval v. Okay, from here if you interpret from this graph, I calculated function at 1.0, it is initially at a, and then I calculate function at midpoint, which is the function value is minus 0.4 this, and when I calculate function, when I multiply these two functions, then this value is positive. It means root is not in between these two, and it is clearly shown from the graph. If you calculate 1.25, then root is not between this. So root is between that midpoint and the next interval, that is the closed interval v. So it is only general for introduction. It means the value, if I calculate the function value, let us say function at a, this multiplied by this function at its midpoint. Okay, midpoint, let us say I choose this value, some value, let us say sol 1 equals to this. So sol 1 is this positive. If I calculate sol 2, okay, solution 2, second is this fn multiplied by this midpoint and the next point. Okay, and in second interval v, f mid, and this point function at b. Generally write sol 1 again that. So this, the product of these two functions, that functions at midpoint and the last interval, that is negative. It means that the root lies in between these 2 points. So I have to make a substitution. I have to replace the point A by the midpoint, and B remains same. So root lies between this 1.25 and 1.5, and I again subdivide these two interval. Okay, again divide this interval. Let us say I have this midpoint. Okay, I write A is equals to this midpoint. Now I replace A with midpoint, so this interval is here A, and the V is again that V interval, and I divide subdivide again is next midpoint. Let us say midpoint 2. Midpoint 2 is equals to this A plus B divided by 2. So this is the midpoint 2, and what is the value of this midpoint 2?
that is 1.35. So we are close to this number. And now I evaluate the function at that second midpoint. Okay, this midpoint 2. So I evaluate function at midpoint 2. So function value is negative here, and the function value at v we already know is positive. And let us say it is clear that root lies between this midpoint and this. Okay, root lies between this midpoint 2 and this, not the midpoint 2 and midpoint 1, in between these two. Again, you subdivide this function, this value at midpoint 2 and a. So you replace again a with this. Now this a is this midpoint 2 and b remains same. Okay. Let us say we do another calculation for that. Let us say a is nothing but a is equals to midpoint 2. A is equals to midpoint 2 and b remains the same. And the function value at the midpoint 2 is this, and the another midpoint in between them, let us say midpoint 3, is nothing but this a plus v divided by 2. And this midpoint 3 is 1.43, and again we have to check the solution, that the function value at this midpoint. So let us evaluate function at this midpoint 3. Okay, midpoint 3, function value is this positive 0.00, and the function value at a, that let us say that's b interval, is positive. The condition, that is fn of a and fn of b must be negative, so that one of the function at one point must be negative, because the function is crossing from a positive to negative, so that the function at midpoint must be negative, or function at b is positive. Okay, if somewhere is negative, so though both of them are positive, it is said that the function not lies in between them. And again, midpoint is 4.413. At that point, this is not the root. Okay, the root is 1.414. Okay, so let us say that root lies in between this midpoint 3 and midpoint 2. So what will be the midpoint 2? I have to check first. Midpoint 2 is this 1.35, and this midpoint 3 equals to 1.43, and I calculate the function value at this midpoint 2 and check the values of function at this midpoint 3. Okay, so the product of these two is negative, function at midpoint 2, so root lies in between them. So I have to subdivide this interval, that is midpoint 2 and midpoint 3, divided by 2, and again check whether the function is positive or negative at that point. So from there we can evaluate the solution of this, root of this this non-linear equation. So these are the initial conditions you check, or you can write another functions. So you can write a program and write up a condition. So condition check whether this is a positive, negative, and the root, the interval may be then selectively chosen to where the root lies. So you can calculate the root from here. And there is some other possibilities to how to check the root of this equation. That is somewhere we have written y equals to x square minus this 2. And there is a one function called fsolve. Okay, you can find the root of this function using a inbuilt library or inbuilt function of Python using fsolve. This is y. Let us see, I have from scipy dot optimize import this fsolve. And now input name fsolve. So there is a function called fsolve. So I check fsolve this function y.
initial value है ना, x naught is there. X naught is the starting estimate for roots of the function at x0. Here is not callable. Let us say I define a function that is this x1 square minus 2. X1 is not defined yet. So you can check, you can check from help section how to apply the def solve function from SciPy optimize to calculate this root, or you can further calculate using this method of bisection by bisecting the interval into two halves and calculating the function at f and a and at f midpoint and at f mid and at final point, and also check whether these two conditions do matter. साइन कन्वर्ट कर दो। इधर ही है ना, ये तो प्रिंसिपल तक के ना। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। और जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है। यहीं का हमारा है प्रैक्टिकल। प्रिंसिपल सर किसी नीचे लेना। So I hope this is clear to all of you that how to evaluate these functions or these roots using bisection. In next class I write a program in Python, actually writing a condition to check whether these roots lies in between A and B or midpoint, such that we can calculate by iterating loop to find out the roots of that equation. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay.